Good afternoon, everyone. A very warm welcome to you as we celebrate 50 years of UNFP in India. आप सबका स्वागत है आज के इस डिजिटल इवेंट गर्लफ्लुएंसर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया टेक स्पेस अब लड़कियां बनेंगी सोशल मीडिया की सुपरस्टार्स. My name is Pinky Pradhan and I will be your moderator today. I lead communications and media at UNFP India. मेरा नाम पिंकी प्रधान है और मैं आज आपकी मॉडरेटर हूँ. मैं यूएनएफपीए इंडिया की कम्युनिकेशंस एंड मीडिया लीड हूँ. As UNFPA celebrates this milestone, we are also looking at 50 years ahead. And one of the key drivers and accelerators towards a Vikshit Bharat is tech empowers gender. With roughly 470 million people using social media, influencer marketing industry reaching 12 billion, and hyper-local regional apps, short video formats dominating the content space with the aspirations of 250 young people in India, this discussion could not have come at a better time. Our panelists today represent the empowering nature of social media. Let's kick things off by introducing them. We have Ms. Andrea M. Wojnar, who is the UNFPA India representative. हमारे साथ है Ms. Andrea M. Wojnar, जो UNFPA India की head है. We also have Mr. Sunder Venketraman. He's the head of content creator and monetization ecosystem of Josh Apps. Josh हमारी एक बहुत अच्छी partner रह चुकी है. Josh is one of our esteemed partners, and together we have done a campaign, ये मेरी choice है, which has reached out to 66 million people. I also want to welcome our two very own talented and courageous tech Sakhi Yashoda, who's joining us from Ajmer, Rajasthan, and digital Sakhi Asha, who's joining us from Chhatarpur, Madhya Pradesh. हमारे यूएनएफपीए इंडिया की प्रोग्राम से जुड़ी हुई दो होनहार और बहादुर लड़कियां टेक सखी यशोदा जो अजमेर से हैं और डिजी सखी आशा जो छतरपुर से है, वो आज हमारे बीच में है. On behalf of UNFP India, it is once again my absolute pleasure to be interacting with such passionate and brilliant social media minds this afternoon. आप जैसे सोशल मीडिया के सितारों के साथ आज मुझे बात करके बहुत खुशी मिल रही है. Having said that, may I now request Andrea, who has been championing gender equality not just in the physical world but also in the digital world, to share her keynote address. Andrea, please, over to you. Hello and namaste, young visionaries, girlfluencers, and future techpreneurs. It's so exciting to be here with all of you today because it's a powerful realization running through my mind, the power and the impact of digital creators and social media. In fact, it's worth noting that India recently hosted the National Creator Awards 2024, which was graced by the Honorable Prime Minister. We, for our part at UNFPA, are celebrating 50 years in India this year, and we've been privileged to witness countless girls and women achieving what once seemed absolutely impossible. It's a testament to the digital era being a fertile ground for those who are ready to make their mark and have their stories heard, like so many of you. We have incredible people on the panel, people who understand this firsthand. We have Dolly Singh, who has brilliantly used social media to carve out a successful creative career. We have Sunder Venketraman, who's got an insider's view on how young talent in India's heartland are using digital platforms to showcase their skills and get noticed. And we have Yashoda and Asha, our very own inspiring tech Sakhi and Digi Sakhi, who have changed their lives for the better through social media upskilling. Across India, young people are challenging outdated social norms, such as only men and boys can be tech savvy. We know that's not true. These are breaking down barriers by questioning traditional expectations, like the belief that certain careers and subjects in schools are only for boys or only for girls. But the truth is, tech empowers everyone. It empowers boys, but it also empowers girls.
And the very fact that young girls are now launching their own businesses, supporting causes they believe in, and even using social media as a digital CV to land dream jobs is absolute proof of this. So I ask you all, how will you leverage social media to transform your life? And what news stories are you eager to tell? The digital era is ripe with opportunities for expression, financial independence, and leading truly transformational change. So, how are you going to seize these opportunities? That's what I want to know. The responsibility, however, is not entirely on your shoulders. With 90% of modern jobs requiring digital skills, there's a need to move beyond providing access to technology to girls actually benefiting from it. In doing so, they're going to turn into leaders and agents of change, and we believe drive India towards an even brighter economic future. The country's growing fast, with very quickly changing and rising GDP, and with the greater involvement of girls, we know that that pace will continue and maybe even accelerate. So let's renew our commitment to empower every girl and woman in the social media techscape, advocate also for their safe spaces, and amplify their voices, stories, and successes. So before I close, I want to leave a message for you, the young people. Never forget that your authentic voice, your actions, and your leadership have the power to change the real and the digital world. Your voice will make Vikshit Bharat a meta power. Thank you and Dhanyavad. UNFPA India is celebrating 50 years. 50 years forward. When the young actually get to be young, find answers to world's big old problems. When the older ones enjoy getting older without getting lonelier. When men will be men has a new meaning. When the world witnesses the rise of the competent women. Tech-savvy ladies taking over everyone's imagination, inspiring changes to care more for our planet, while taking control of their own body and mind, their health and happiness, their own future, their own choice. This is our pact for a future defined by new social norms. Let's come together to celebrate our 50 years forward. Thank you, Andrea, for your inspiring words. It has truly resonated with all the audiences who are listening, who are part of this program today. Now, I would like to begin the first panel discussion, and we have Sunder. And the theme of the panel discussion is navigating the online social media space. Sundar, your app Josh has had phenomenal growth. It has tapped into the budding creativity, acting skills, and storytelling of all of India. This dynamic app has given a platform to so many people, especially the youth of India across Bharat, to showcase their many talents. आपका जोश ऐप तेजी से भारत का फेवरेट शॉर्ट वीडियो ऐप बन रहा है। इस ऐप ने सैकड़ों लोगों को, खासकर कि युवाओं को, अपने कई टैलेंट, अपनी एक्टिंग, अपने डांस को पेश करने का मौका दिया है। As the content head for Josh, you have got an inside view of the digital landscape in regional India. When it comes to women and girls navigating social media platforms, what's your take on the unique challenges they face? सुंदर, आपके हिसाब से लड़कियों का चैलेंजेस, वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं जब वो एक सोशल मीडिया यूज करती है? ओवर टू यू सुंदर. First and foremost, thanks a lot, Pinky. I mean, I'm really humbled and honored to be in this panel. Very important topic of discussion, what we're talking today. With regards to your question, I would like to take it in parts. I think women's safety
in social media apps is very important, and it's actually the current need of the hour, because today women entrepreneurs, women collaborators, creators are actually voicing out and actually talking and creating and carving a niche of audience for themselves. So whether it's just not anymore about them just putting up random content. They're actually educating people on finances, the way to live a life, on handling situations, and so on and so forth. So some of the challenges that women actually face in social media is that we have seen is about the whole comment sections in app. You would see that any social media has allowed anybody with any voice, जिसको जो मर्जी उन लोगों को बोल देते हैं. I think वो गलत है. मतलब अगर जो भी कोई काम कर रहा है, anybody is working on a particular niche genre, they have the right to do what they want to do. You can't be using comments and just randomly putting out and just blabbering anything you want on the comment section. And I think that comment moderation and comment screening should be the most top priority today. So one of the initiatives that we took in the Josh app is that any of the content creators, content when they make a content, when they put it on the feed, they've actually enabled an AI-led content moderation. So if anybody uses any form of abuses or any form of demarcation, we actually delete the user and put them off. That way, we are ensuring that anybody who is a content creator can actually live a safe environment and make content as per their liking. Thank you so much, Sunder. You have rightfully pointed out about the issue of online safety. And having said that, Sunder, can you just talk about what are the strategies that young women can take when they are navigating online safety? And also, what has Josh app done about it? Is there anything that Josh is coming about, or it's testing? It's already there to address the issue of safety among women and men too? Right. So actually, I think today the way to run any app in the country is not by a tech guy or a content guy trying to make an app feature. It's about listening to what the audience wants you to build. I think that's the most first principle approach that we take. It is about what your audience wants, and we are just a bridge that builds it for them. Now, when it comes to some of the features that women need to be very careful is that, I mean, you look at a lot of trends on Instagram where people end up posting a lot of photos without even understanding why that challenge is, why you want to post it. You just put photos of your young daughters, of your kids, and without even questioning why this photo is uploaded. Because you know how AI today can actually be a default setting and actually can make it tough and bad for you. Now, one of the features that we had realized in Josh app is that it came to us from a cohort of women in Delhi and in some of the North audiences, where they felt that a lot of people, a lot of women work late nights in their office. They leave their office post 10 p.m. and they reach home at 11:30, 12 p.m. in the night. They feel a little bit threatened to sit alone in the car, in the night, and especially it's fogged and windows are blur and so on and so forth. So they wanted a feature where they could feel safe and they could feel that I would be safe in that particular car. So one of the unique ideas, we built a feature called as Safe Swipe. Okay, it's a very great feature, and we've won a lot of awards for it, and we actually got it patented right now. So you go to the Josh app and you press the feature called as Safe Swipe, and as soon as you on the button, it gives you a fake call. On the other side, there is an audio which sounds like your father, your mother, your brother, your sister, your friend, and it says that, "Hey, Pinky, अभी तुम किधर हो?" तो पिंकी इज लाइक, "मम्मी मेरे को घर में बहुत टाइम लगेगा घर में आने के लिए." "बेटी क्या कर रही हो?" "नहीं मम्मी, अभी मैं घर से निकली हूँ, मैं अभी बैठी हूँ टैक्सी में, ये टैक्सी का नंबर ये है, ये ड्राइवर है, डोंट वरी, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी." "Okay बेटा, टेक केयर," and the call hangs up. So for the driver, it looks like actually you're on a real call, but actually it's a fake call. So it actually feels that the driver knows that somebody is watching them, and this girl has managed to pass on the details to the particular person. So there can be nothing can happen on the journey. So yeah, as tech entrepreneurs, I think it's our fundamental duty to build tech that supports safety in all genres. Yeah. Thank you, Sunder. We'll definitely come back to you during the question and answer session. I will now move on to our second panel, which is digital storytelling for change.
UNFPA India is implementing two Tech Powers Gender program, Tech Sakhi in Rajasthan and Digital Sakhi in Madhya Pradesh. The program aims to upskill young girls from the grassroots on digital storytelling, how to use reels, how to make short videos, and most importantly, run campaigns that are close to their heart. UNFPA इंडिया ने दो टेक एम्पावर्स जेंडर प्रोग्राम की शुरुआत की है, टेक सखी राजस्थान में और डिजिटल सखी मध्य प्रदेश में। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से युवतियों को सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग की सीख और ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि रील्स, शॉर्ट वीडियोस बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कैंपेन्स को कैसे आगे बढ़ाना। I am honored to introduce Yashoda, our tech Sakhi from Rajasthan. Her story is a must listen, truly inspirational. She is joining us today now. मैं टेक सखी यशोदा को वेलकम करती हूँ। यशोदा की कहानी बखूबी प्रेरणादायक है। आज वो अजमेर से हमारे साथ है, हमारे बीच में है। यशोदा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है। यशोदा, मैं चाहती हूँ कि आप अपना टेक सखी बनने का सफर और सीख दोनों हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। आपकी स्टोरी, आपकी जुबानी हम सब सुनना चाहते हैं। Yashoda, can you please elaborate on how this program has helped not just you but other women in your community to break from traditional roles and explore new opportunities? Yashoda, over to you. हेलो एवरीवन, थैंक्स मैम। मेरा नाम यशोदा गुजर है और मैं हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यशोदा, हम आपको सुन पा रहे हैं। यशोदा, ओके। मेरा नाम यशोदा गुजर है और मैं अजमेर का ही एक गांव है घोगरा, वहाँ से हूँ। तो मैं 10 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, पर मेरा गौना अभी हुआ नहीं है। और इन सारी परेशानियों में भी मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी और मैंने हाल ही में अपना जो एमए है सोशियोलॉजी से कंप्लीट किया है। इसी के साथ ही जो गांव में स्वयं सहायता समूह होते हैं उसमें मैं सदस्य थी और उसके साथ ही मैं समूह सखी भी बनी, जिससे कि महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकूं उनका, और उनके बैंक अकाउंट खुलवाना, उनको लेन देन करना सिखाना, ये सारी चीज़ें मैंने की। और मेरा एक सपना भी था कि मैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सीखूं। उसी के ज़रिए मुझे 2023 में पता चला कि एक टैग सखी प्रोग्राम जो है यूएनएफपीए की तरफ से जो चलाया गया है उसमें मैं जुड़ी और उसमें जुड़ के मैंने कंप्यूटर सीखा और मोबाइल का यूज़ करना सीखा। उसके साथ ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट लिखना, संपादन, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और ये मेरे लिए ऐसे हेल्पफुल रहा कि जो खबर एरिया न्यूज़ चैनल है वो और चंबल मीडिया के कोलैबोरेशन में एक फेलोशिप निकाली गई थी, रिजवाना डिजिटल चेंज मेकर्स फेलोशिप, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे स्किल्स इतने इम्प्रूव हुए कि अभी मैं उसमें फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ और मैं उसमें स्टोरीज देती हूँ। मेरी 5 स्टोरीज उसमें पब्लिश हुई है और उसका मुझे स्टाइफंड भी मिलता है। इसी के साथ ही मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे जो कि युवानिया और पीएलडी की तरफ से 3D सपने जो है उसमें मेरे आर्टिकल छपे और उनका मुझे मतलब प्राइज भी मिला। तो मैं अपने जो आसपास की जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाना, उनको योजनाओं से जोड़ना और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और खुद का भी वो कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे टैक्स की प्रोग्राम है उसी के जरिए मैंने सीखा कि खुद का भी यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो कि ट्रैवल पर है और काफ़ी उसमें काफ़ी इम्प्रूव भी दिख रहा है। तो काफ़ी लड़कियों को मैं वो स्टार्ट करना भी वो सिखा रही हूँ और इसी के साथ ही मतलब आगे केवल मैं ही नहीं और भी जो लड़कियां हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हो गई है या फिर जो यंग बहुएं हैं, तो वो केवल घर तक ही सीमित नहीं हो, एक उनका भी एम्पावरमेंट हो, इसके लिए मैं मतलब उनको अलग अलग चीज़ों में जोड़ती हूँ, उनके साथ सारी चर्चा करना और ये सब रहता है। इसी के साथ ही मेरा सपना है कि मैं मतलब एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो है, टीवी जर्नलिस्ट में बनूं, तो उसी के लिए मैं अभी मतलब और अपने पे काम कर रही हूँ और मतलब ये मौके मिलना बहुत ही मतलब अच्छा है कि एक फ्रीलांस होके भी काम करना और साथ ही मतलब अपने सपनों को पूरा करना। तो थैंक्स फॉर यूएनएफपीए की आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने के लिए मौका दिया और
ओवर टू यू मैम, थैंक यू। यशोदा, आपकी कहानी सुन के तो मैं इतनी इंस्पायर हो चुकी हूँ एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं वो सभी इंस्पायर हो चुके हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू आशा, यशोदा, क्या आप अब 2 टिप दे सकती हैं जो हमारे आज इतने सारे यूथ इकट्ठा हुए हैं कि वो कैसे टेक सखी बन सकते हैं या कैसे अपनी स्टोरीज बता सकते हैं, जो फील्ड से जाके कैसे वो काम कर सकते हैं जो आप कर रही है वहाँ पे। जी, तो टैक्स की केवल हम ही नहीं, कोई भी बन सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा पूरा जो मतलब एक हथियार है हमारा फ़ोन, कि उससे हम सारी चीज़ें पूरा पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं उससे, और अपना खुद का भी बिजनेस कुछ भी हो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन का यूज़ करना सीखना। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं भी कहीं भी जाके हमें सीखना पड़े, पैसे देके ज़रूरी नहीं है। हम अपना खुद का कैसे हम उसको डेवलप कर सकें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें हैं। तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करना, उससे लेके भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, उससे भी हम पैसे अर्निंग कर सकते हैं अपना खुद का चैनल स्टार्ट करके, और साथ ही कहीं पे फ्रीलांस काम करके। और यूथ के लिए कि मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कुछ भी अगर लाइफ में अगर परेशानियां आए तो उनको उनको लेके बैठ ही जाना, नहीं, उससे आगे भी अपनी लाइफ है, और आगे चल के अपने सपनों को पूरा करना, और दूसरी चीजों को भी साथ में, और केवल खुद के लिए ही नहीं, और जो लोग हैं उनको भी साथ में लेके चलना। तो वो काफी मतलब अच्छा है। और इसी के साथ ही मतलब मैं एक गर्ल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, क्योंकि मतलब अपने साथ जो और लड़कियां हैं उनको भी मैं जोड़ती हूँ काफी सारी चीजों में। तो ये कहना है मेरा। थैंक यू यशोदा। मुझे लग रहा है कि मैं आज ही यूएनएफपीए छोड़ के आपको ज्वाइन कर लूं और एक टेक सखी बनूं। थैंक यू सो मच। बहुत मजेदार लग रहा है ये सब सुन के, बट आई एम श्योर बहुत कठिन काम भी है आपके लिए। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू इंट्रोड्यूस आशा, who is our amazing digital Sakhi from Madhya Pradesh. Asha has impacted over 200 young women in her community as a digital Sakhi, and we want to hear from Asha about her journey. आशा, आपने आज तक 200 लड़कियों को डिजिटली एम्पावर किया है। आप अपनी सीख ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर करें। हम जानना चाहते हैं आप इतनी छोटी उम्र में ये सब आप कैसे कर लेते हैं। ओवर टू यू आशा। जी मैम, नमस्ते। मैं डिजिटल सखी आशा प्रजापति। मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव चंदपुरा से। जब मुझे पहली बार डिजिटल सखी बनने के लिए बुलाया गया, तो वह मेरे जीवन का पहला सफर था। जब मैं किसी बड़े शहर में गई, यानी कि भोपाल। भोपाल जाके मुझे ट्रेनिंग मिली, और ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे बोलना सिखाया गया, और मुझे ये भी सिखाया गया कि कैमरे को जो वीडियो बनाती है कैसे वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, हुक कैसा होना चाहिए, और जो अपने फॉलोवर्स हैं उन्हें कैसे बढ़ाएं। सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप हैं, उनको चलाना भी मुझे सिखाया गया, और जो अपनी आवाज है वो दुनिया तक कैसे पहुंचाएं, वो सारी चीजें वहां पर सिखाई गई। और जो इंस्ट्रूमेंट है जो एक अच्छी वीडियो के लिए होने चाहिए, वो मुझे वहां से उपलब्ध भी कराए गए, और मोबाइल भी मुझे दिया गया। जब मैं उसके बाद अपने गाँव आई, तो जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा था उसे फॉलो किया, और जो ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि मेरे गाँव में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लड़कियाँ बहुत सी बातें हैं जो खुल के साझा नहीं कर पाती हैं, और जो अपनी बातें हैं वो रख ही नहीं पाती हैं, शर्म हो या कहें तो वो अपनी बात किसी से शेयर करने में झिझकती हैं। तो मैंने ऐसे कई मुद्दे देखे, जैसे कि आरटीआई, एसटीआई, उसके बारे में एक रील्स के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया कि अपन कैसे अपनी बात को खुल के साझा कर सकते हैं, और जो रील्स के माध्यम से भी, और जो खुल के पूछो खुल के जानो चैट बॉक्स के माध्यम से कई आशा, लड़कियों ने क्या आप घर हमें बैठे सुन अपनी सकती है? समस्या लगता है का आपका समाधान पाया, घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पाया, और आज वो अपने आशा, आपकी आवाज कट रही है। जी मैम। सॉरी आशा, हेलो आपकी आवाज कट रही थी। इंटरनेट, हाँ, कुछ इश्यू लगता है। अब आप बोल सकती हैं आशा। मैम, फिर से शुरू करें क्या? नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रही थी आप उसको कंटिन्यू कीजिए। वो जी बीच मैम, में थोड़ी सी मैंने इंटरनेट कनेक्शन आपके ऊपर से रुक रुक के आ रही थी। जी।
फिर मैंने जो नशा है वो एक महिला के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, उस पे मैंने एक रील्स बनाई जिसमें एक महिला का पूरा जीवन चक्र मैंने दर्शाया कि एक महिला को किस प्रकार प्रभावित करता है। और मैंने लोगों से अपील की कि हम सबको मिलके इस नशे के चक्र को तोड़ना है, ताकि हम अपने समाज और जो महिलाओं का अपना हुनर है वो दुनिया को दिखा पाए। और मैं यही नहीं रुकी, जो मेरा स्वयं का टैलेंट था जैसे कि पेंटिंग करना, मूर्ति बनाना, तो मैंने जब मैं डिजिटल सखी बनी तो मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया अपनी पिक और अपनी वीडियो। तो मेरे कॉलेज की टीचर लोगों ने उन्हें देखा और मुझे बुलाया कि आप प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। तो मैं प्रतियोगिताओं में गई और मैंने जिला लेवल पर प्रथम स्थान पाया और वहां पर मुझे मेरे यहाँ के कलेक्टर सर ने मुझे सम्मानित किया और जो समाज कल्याण मंत्री है, केंद्रीय एंड्रिया का मंत्री, ना उन द्वारा भी मुझे इसका सम्मानित किया गया। थैंक यू आशा। आशा आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि डिजिटल सखी जो है उससे जी मैम। समाज में आपने क्या थोड़ा सा चेंज देखा है? जब आप पहली बार डिजिटल सखी बन के कैमरा एक मोबाइल फोन लेके चली थी तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला? क्या आपको बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क्या करती है, दिन भर बस मोबाइल लेके घूमती है? आपको क्या ऐसे ऐसे प्रकार के कोई प्रश्न उठे आपके पास आशा? यस मैम, क्योंकि मैंने बताया कि मैं एक छोटे से गांव चंद्रपुरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर शिक्षा को लेके, पोषण को लेके, यहाँ तक कि लड़कियां अपनी आवाज खुल के किसी से साझा ही नहीं कर सकती और अपने लिए लड़ना कभी सिखाया ही नहीं जाता। तो एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेरे गांव की लड़कियां, अब उनके पास हुनर था लेकिन एक माध्यम नहीं था जहाँ पर वो अपनी बात रख पाए। तो मेरे गांव की कई किशोरियां, जैसे कि 200 से अधिक किशोरियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आज अपनी बात अपने तक ही नहीं, जैसे कि कोई बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता या बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती, तो आज जब मैंने उन्हें चलाना बताया कि अब जो मैंने सीखा था वो उन सबको सिखाया और बताया कि अपन अपना टैलेंट कैसे दुनिया को दिखा सकते हैं। आज मेरे गांव की लड़कियां हैं, उन्हें गांव के बाहर से भी लोग उन्हें बुलाते हैं कि आप मेरे इधर आइए, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी मदद होती है और वो महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है और वो अपने हुनर को दुनिया को दिखा पा रही हैं। और जो सोशल मीडिया पे हम लोग आते हैं तो मैम इशू ये रहता कि कई प्रकार के कमेंट आते हैं। लड़कियों का मानना था कि दीदी हमें जैसे किसी प्रकार के कमेंट आ रहे या कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है तो अपन उससे कैसे बचे। तो मैंने उन्हें बताया कि ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने मैम लोग से बात की, मैंने अपनी बात को दबाया नहीं, अपनी बात को आगे उठाया और मैं अपने लिए लड़ना सीखा, क्योंकि जो मुझे फॉलो कर रही थी, अगर मैं अपनी बात ना रखती तो वो शायद वो भी कहीं आगे ना जा पाती। तो जब मैंने वहां पर उन लोग को बताया कि कई प्राइवेसियां होती हैं सोशल मीडिया का जिनका यूज अपन कर सकते हैं। अगर प्राइवेसी से अपना काम नहीं चल रहा है तो क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल कीजिए, उमंग हेल्पलाइन पे बात कीजिए, जिससे अपन ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं और अपना हुनर दुनिया को दिखा सकते हैं। और आज मेरे गांव की लड़कियां इसे फॉलो भी कर रही हैं और मेरे साथ में पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियां आज अपना टैलेंट दिखा पा रही हैं। और ये सब संभव हुआ डिजिटल सखी के माध्यम से, जो आज हम लोग इतने आगे और इतने छोटे से गांव से आज आपके साथ बात कर रहे हैं। मैम एक पंक्ति है जो हम आप लोग के साथ साझा करेंगे, जिसमें आशा, हम आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे मैम बस यहाँ पे। 4 ही शब्द हैं, 4 ही अच्छा शब्द चलिए, हैं। आपको मना नहीं कर सकते आशा, चलिए आप डिजिटल यस सखी मैम। हैं, चलिए। खुद की ही नहीं, सबकी बुराइयों से लड़ना है, अकेले नहीं सबको साथ लेके बढ़ना है, सीखना है और सबको सिखाना है, कर सकती कुछ भी दुनिया को बताना है, चलती रहूंगी ना समझो थकी हूँ मैं, डिजिटल सखी हूँ मैं, खुद से शुरू करके सबको सुधारना है, जो दबे हैं कहीं उनको उभारना है, सखियों को अपनी जागरूक करना है, अंधेरे से उजाले की ओर रुख करना है, जीतूंगी जरूर, बड़ी हती हूँ मैं, डिजिटल सखी हूँ मैं, डिजिटल सखी हूँ मैं। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने तो बिल्कुल माहौल अच्छा कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा सुहाना कर दिया। थैंक यू आशा। एंड अब हम हमारे इवेंट के Q&A की शुरुआत करते हैं। हमारी ऑडियंस भारत के अन्य राज्यों से आज हमारे साथ इस इवेंट के लिए जुड़े हैं। सबसे पहला प्रश्न एंड्रिया की ओर है, शुभी फ्रॉम मध्य प्रदेश।
And Namaste, Andrea. I'm Shubhi Mahajan from a small town of Madhya Pradesh, India. And I'm very curious and excited to ask you a question. It is, if you were a content creator, what would be your niche? Okay, thanks so much, Shubi. I have to say, I feel like I am a content creator because I work really hard with the team here at UNFPA to talk about rights and choices in a meaningful way and in a way that young people and older people, rural and urban, from different ethnic groups, from different social groups, can understand. And, you know, we're talking about really sensitive issues about gender-based violence, child marriage, family planning, sexuality, and that's really hard. So the question is for us, like, how do we adapt that to our context? And how do we engage as many people as possible in a way that brings them in and doesn't alienate them? So we're learning from you every day. You're our collaborators, you're our audience, you're our inspiration for what works and for how we can go forth and reach more young people in particular. Because I really think with our content, which is so sensitive, tech is the great equalizer. And it will really help us reach so many people because it can be done in a really discreet way, and it can be done in a really democratic way, and it can be done in a way that enables people to get information that they wouldn't necessarily get from anywhere else. So I do feel like a content creator with my team, but I think we can get better at it every day. So I'll stop there. Thanks so much, Shibi, for the question. Thank you, Arya, for your amazing answer, Arya. It means a lot that I got an answer from you. Sorry, Shubhi, we couldn't hear you, but I think what she meant, Andrea, and what I could little make out is that she found your answers inspiring, and I'm sure that will also help her be a better content creator. And I can vouch for that Andrea does create the content. We work with Andrea whole time, and each day she is inspiring us to do more. Thank you, Andrea. But do hold on. There's another question coming to you, Andrea. We have a very young person, Priya Rathore from Rajasthan, who wants to pose this question to you. Hi, Andrea. So my next question to you is, as a mother of daughters, so what is the best given the daughters to navigate the social media space? Yeah. That's a really good question, Priya. I have two daughters and also a son. And in many ways, they're much more advanced when it comes to tech than I am. But what they're not more advanced about is maturity and life experience. So my best advice to them is a little bit like what Asha said. Be smart. Don't expose yourself more than you need to. So be careful about the private information you're giving, your location, your identification details. You don't want to divulge too much. You want to give enough to make your points and to come across as your on-screen character. But also, don't get pushed around and don't be bullied. And as Asha said, use the resources at your disposal. Use the hotline to report any kind of bullying, and don't be afraid. Don't be afraid. One thing I've learned in life is that bullies like it when you don't speak up, and bullies like to feel in control. So the more you stand up
and the more that you say no means no, I'm not going to accept this, they tend to back off. They tend to back off. So it's about finding the happy medium and the good balance between using that power that I talked about in my opening remarks, using that absolute huge reach that you have through digital to make your case, to sell your goods, to plead your cause, to educate yourselves, whatever the function is that you're using your digital capacity for. But do it in a smart way. Do it in a smart way. Find that balance, but don't be afraid, because the world is your oyster. The world is in your the palm of your hand, literally, with your phone or other digital device. I wish you all the very best with it, and look forward to hearing more of your stories as well. Thanks a lot. Thanks, Andrea. I think Priya has dropped out, but I'm sure those the tips that you gave, the advice is true for each one of us who are navigating the social media space. So thank you so much, Andrea. That was quite personal. Thanks for sharing with all of us. Now, moving over to Sunder. Sunder, we have a question for you from Santara, who is joining us from Ajmer. Hi, Santara. हाय क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Absolutely, we can hear you. बोलिए मैम. मेरा नाम संतरा है और मैं भी राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक हिंदी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अदर स्टेट्स के साथ कैसे जुड़ सकती हूँ. सुपर. तो अब हिंदी में क्या बनाते हो कंटेंट? व्हाट इज योर कंटेंट? आप क्या करते हो हिंदी में कंटेंट? इफ आई वांट कैन आस्क यू. अभी मेरा कंटेंट इतना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में सीखना शुरू किया है, सीखने के साथ करना शुरू किया है. तो पॉडकास्ट एंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है, उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड सोशल मीडिया पर मेरा इंस्टाग्राम मैंने बना रखा अपना, तो उसके अंदर नॉर्मल पोइट्री वगैरह. तो संतरा, आई थिंक पहले बात तो आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हो. सो congratulations on that part. You're on the right foot. Thank you. इसलिए आपको करना कुछ नहीं है संतरा. आपको आपका जो भी दिल से आपको जो बनाना है कंटेंट, वो बनाइए. आपको बनाना है on food, make it on food. Want to make it on fashion, make it on fashion. Want to make it on fitness, want to make it on finance, education. आपको अपना एक जॉनर पकड़ना है और आपको उसमें ढेर सारा रिसर्च करना है, ढेर सारा मेहनत करना है, and you have to be consistent. अब जैसे अगर ये वाला पहाड़ आप क्रॉस कर लेते हो, फिर तो दुनिया आपकी कदमों में है. फिर लैंग्वेज इज नो बैरियर. आप बैठ जाओ राजस्थान में, आप फूड का एक्सपर्ट बन जाओ. यू कैन डू द सेम कंटेंट विद कोलैबोरेशन, समबडी इन द साउथ, समबडी इन द ईस्ट, समबडी इन द नॉर्थ. तो संतरा, जमाना आज कोलैबोरेशन के हैं. तो आपको जो करना करिए. लैंग्वेज इज नो बैरियर. जो भी करिए दिल से करिए, एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज द लिमिट. Thank you. Thank you so much. Yeah. For answer. Thanks, Santra. That was a really interesting question, and I will definitely listen to your podcast, Santra. Now, moving over, Sundar, just hold on. We have another young person who wants to question you. His Papon from Odisha. Go. Papon, are you there? Papon, can you hear us? Papon, are you there? Okay, I think there is some technical issue. So Sundar, on behalf of Papon, I'm going to pose that question to you. He had sent it to us before this whole session started. So his question was, I am a Hindi content creator. Is there a way for me to tap into audiences from non-Hindi speaking states in India? मैं एक हिंदी कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बाकी स्टेट से कैसे जुड़ सकती हूँ. Okay, I think the same question that Sundar, can you hear us?
I can hear you. I think that is Papan has come on the line. Papan, can you hear us? Yeah. No problem. Hi, Papan. Yeah. Uh, हाय बोलिए सर. सो पापन, मैंने आपके बिहाफ में सुंदर से वो क्वेश्चन पूछ लिया, बट आप दोबारा उनसे पूछ सकते हैं. बोलिए सर. हाँ मेरा क्वेश्चन है कि तो जोश ऐप पे हाँ, जोश ऐप पे बोलिए. जोश ऐप पे जो वो कौन सी 3 चीज है वो जिसको इस्तेमाल करके मैं आपका कंटेस्ट स्टैंड आउट कर सकता हूँ. अच्छा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो जोश ऐप में पापन वेरी क्लियर क्वेश्चन. मेरे हिसाब से आपको देखो, हाँ. जोश ऐप में आपको 3 चीज मिलता है. एक है भारत का अपना लैंग्वेज. आपका नाम पापन है, मेरे हिसाब से आप उड़ीसा से हो, तो आप जोश ऐप में जा सकते हो. आप उड़ीसा में जाके आप ओडिया चूज कर सकते हो एज योर लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस. तो आपको कुछ जरूरत नहीं है इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है. आप अपने लैंग्वेज में चूज कीजिए. यू कैन मेक द कंटेंट इन योर लैंग्वेज. So that is the first advantage. Number 2 is that our AI tools जो हम लोग टेक बनाते हैं ना, तो आपको जो भी आप कंटेंट डालते हो, the main content problem is distribution. तो आप जैसे कंटेंट डाल देते हो, all our tech tools enable distribution for you automatically. आपको the tech automatically give you hashtags, power distribution, and so on and so forth. The third part is that there's some very good fun interactive challenges which actually makes a content creator go up in the ladder from being a normal OGG creator to be a celebrity star. So Papan, I'll be happy if you can come on Josh app. My team will quickly reach out to you. Happy to have you on board. Yes. Thank you, sir. Thanks, Thank you. Sunder. That's quite an offer. I'm sure Papan will, follow up with your team. With this, we are concluding our Q&A. Unfortunately, Dolly Singh, India's much-loved content creator, due to personal emergency, she could not be here with us today. However, we have 2 young youth who are joining us, Monica and Munna, who were supposed to interact with Dolly. May I request Munna and Monica to just share their thought about the discussion that we have had today. What did they learn? In brief, if they can, share it with all of us today. Munna and Monica, over to you. Yes, Munna, do you want to come first? क्या आप अपने विचार को रखना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के साथ? मुन्ना, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे, तो हम थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है, उसको हम ठीक कर रहे हैं. ओवर टू यू मोनिका. मे बी मोनिका, यू कैन शेयर योर थॉट्स. थैंक यू सो मच पिंकी फॉर इनवाइटिंग मी. मैं जो ये सारी चीजें सुन रही थी तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि कितना कुछ गर्ल एम्पावरिंग के लिए किया जा रहा है, और कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो डिजिटल सखी है, जो टेक सखी है उनकी, तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. और कैसे लड़कियां एम्पावर हो रही हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ. हरियाणा के चरखी दादरी में एक गांव है अटेला. वहां पे मैंने बचपन से अब तक देखा है कि बहुत ऐसे लड़कियां बंद रहती हैं, और उनको मोबाइल का भी इतना यूज नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि उनको इन सारी चीजों से दूर रखा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है या वो समाज को लगता है कि लड़कियां अगर यूज करेंगी तो बिगड़ सकती हैं. तो ये सारी चीजें सुन के फील हो रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है, और कितना जरूरी है चीजों को सीखना और समझना, और इन सारी चीजों को यूज करना या सोशल मीडिया के साथ जुड़ना. तो बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के और देख के. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you, Monica. So good to hear about your personal journey and where you come from. So thank you so much for sharing this. Over to you, Munna. Let's hear from Munna, and I hope the technical difficulties that we are facing has been sorted out. Munna, over to you.
Munna, apologies. I think the the technical glitch continues. So maybe in a next panel discussion, Munna, we will invite you. But I'll have to respect, we are coming to our closure time and I'll have to wrap up today's session. I would like to express our heartfelt gratitude to all our wonderful panelists, our partners, and of course, our lovely audience. Let's now take this conversation on social media by using the hashtag U in UNFPA. Keep sharing your thoughts and participating in the filter campaign. The QR code has been shared in the chat box for you. Thank you for being part of this special UNFPA India 50th year celebration. Until next time, stay connected and keep making a positive impact in the digital world. Remember, you are the architects of today, tomorrow, and the future. And with this, namaste.